Good morning, students. Today we will learn about the concept of mental health and illness. So, which is very important topic about what concepts are behind your mental healthiness and illness. Okay, healthiness is where you feel good, and illness is where you feel bad, or you feel depressed, or you feel low. So, let's see the definition of health. As you all know, what definitions of WHO, according to WHO, health is. So health is a complete state of physical, mental and social well-being, and merely the absence of disease or infirmity. Okay, so WHO simply defines what हेल्थ हम उसको बोलेंगे जहाँ पर आप फिजिकली मीन्स देर इज एन एब्सेंस ऑफ डिजीज इन योर फिजिकल कंडीशन, mentally and social well-being. Okay, three things are there. Mental illness should not be there, means आप डिप्रेस, इंसोमनिया, स्ट्रेस या कोई भी अदर फॉर्म ऑफ मेंटल इलनेस से ना हो. साथ ही साथ आप सोशलाइज्ड हो, मीन्स कि आप सोशल जो कल्चरल एक्टिविटीज़ आपके समाज की होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हो, आप उनके अगेंस्ट ना हो. दैट टाइम यू आर अ हेल्दी पर्सन. Okay, so definition of WHO says, according to WHO, a state of a complete physical, mental and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. Okay, now comes the what is the mental hygiene. As you all know about the physical personal hygiene, जहाँ पर हम personal care, taking of personal hygiene such as taking bath, cleaning nails, cutting nails, washing your clothes regularly. So these are in your physical hygiene, personal hygiene. What is your in this mental hygiene? A science dealing with the preservation and promotion of mental health, as well as prevention and treatment of mental illness or abnormalities. So hygiene, mental hygiene is where you preservation means you preserve your good mental health status. You adopt a good habits such as doing regular exercise for your well-being of your mental healthiness. Then you go for meditation or yoga and avoid stress. Okay, that comes under your preservation and promotion. How you promote? By through the digital medium, means you tell people to adopt a healthy lifestyle, or do regular exercise, do meditation. So these comes under a science dealing with a preservation and promotion of mental health, as well as prevention. How we can prevent this mental illness or mental unhygieneous? By avoiding the stressful situation, coping up with the stress. Okay, we can prevent. So treatment of mental illness and abnormalities. Okay, next we will see what a mental health. Okay, a state of well-being in which every individual realizes his or her own potential and keep up with the normal stress of life, and can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to his or her community. A person who is mentally healthy, a state of well-being जहाँ पर individually अपनी पोटेंशियलिटी को जानता है कि what I can do, है ना, मेरी कैपेबिलिटी क्या है. I can become a good dancer, I can become a good singer, or I can become a good leader. So अपनी पोटेंशियलिटी को जानता है वो चीज़, and cope up with the normal stress. मीन्स कुछ भी नॉर्मल चीज़ें जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट हो रही है उसके लाइफ में, वो उससे ईजिली कोप अप कर ले, एंड कैन वर्क प्रोडक्टिवली. उसके वर्क्स जो है प्रोडक्टिवली मीन्स कुछ यूजफुल फ्रूटफुल चीज़ें हो, है ना, एंड इज एबल टू मेक कंट्रीब्यूशन टू हीज और हर कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द कम्युनिटी. वो उसकी कंट्रीब्यूशन कम्युनिटी के प्रति अच्छी हो. ठीक है. It can be seen as a continuum with the mental health at one end and the mental illness at the other end. Here you can see simply this is a continuum. There a mental health and mental illness means simply says कि अगर आप mental healthiness की तरफ बढ़ोगे तो आप illness से दूर हो जाओगे. वैसे ही अगर आप illness की तरफ बढ़ोगे तो आप healthiness से दूर हो जाओगे. Means we are going continuously through the stress, through the insomnia, through the depression, anxiety, workload.
सो आप इलनेस की तरफ बढ़ते जा रहे हो एंड यू आर गोइंग अवे फ्रॉम योर mental healthiness. When you go towards the healthiness part, using or adopting a coping mechanism, using a stress cope up with the stressful situations such as doing a meditation, yoga, or, or talking with your friends, sharing your problems with your colleagues, family members, so you will come up with a good mental healthiness. So this continuum simply defines this. Okay. Next, what is the mental illness? We have seen the mental health. Now अब हम illness के बारे में देखते हैं. An illness with the psychological and behavioral manifestation. Individual का psychological condition and behavioral condition or impairment in functioning due to social, psychological, genetic, physical or biological disturbance according to American Psychiatric Association. What simply American Psychiatric Association says? Individual जहाँ पर साइकोलॉजिकली बिहेवियरल में रूड है, कॉपरेट नहीं कर रहा है, हर बात पे गुस्सा कर रहा है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है, और मे बी ड्यू टू अ सोशल कंडीशन, मे बी ड्यू टू अ जेनेटिक फैक्टर्स, मे बी ड्यू टू अ फिजिकल बायोलॉजिकल डिस्टर्बेंस. सो आइदर इट कैन बी दिस आपके जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं जो आपके इलनेस के कॉजेज हों. फिजिकल या कोई फिजिकल इलनेस हो गया है, हेड इंजरी हो गया है, कुछ एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से आप मेंटल इलनेस से गुजरने लगे, लॉस ऑफ एनी बॉडी पार्ट्स. ओके, सो दिस कंडीशन कैन क्रिएट योर मेंटल इलनेस. नेक्स्ट है a mentally ill person means a person who is in need of treatment by reason of any mental disorder other than mental retardation according to a Indian mental health. इंडियन मेंटल हेल्थ सिंपली बोलता है कि मेंटल इल पर्सन जो है हु नीड अ ट्रीटमेंट फॉर अ रीज़न ऑफ एनी मेंटल डिसऑर्डर, उसको ट्रीटमेंट की नीड है, फिर सिंपली इसमें बोला गया है. एंड इंडिविजुअल अदर देन द मेंटल रिटार्डेशन की कंडीशन में हम उसको मेंटल इलनेस नहीं बोलेंगे. नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द स्टिग्मा ऑफ दिस मेंटल इलनेस. ओके, स्टिग्मा मेंटल इलनेस के बहुत ज़्यादा है. Okay, what is stigma is actually as defined as a sign of disgrace or discredit which sets a person apart from others. The stigma of mental illness, although more often related to a context than to person appearance, remains a powerful negative attribution to all social relations. So a mental illness, despite centuries of learning and decades of the brain, is still perceived as intelligence, a sign of weakness. स्टिग्मा इंडिविजुअल के अपीयरेंस और मोस्टली हमारा जो सोसाइटी है वो स्टिग्मा क्रिएट करता है रिलेटेड टू, ये बोलेंगे अपीयरेंस के पापों की सज़ा इसलिए बच्चा पागल पैदा हुआ है, या फिर वो बच्चे को वो स्ट्रेस पे इसलिए जा रहा है कि उसके पेरेंट्स का झाड़ फूक कराना, शादी करा देना, किसी को स्ट्रेस से निकालना इज नॉट द मैथड टू कोप अप विद द मेंटल इलनेस. ओके, next we will see about the what are the nature of mental health. We are see there is nothing to be called as perfect mental health. ऐसे किसी चीज़ को हम perfect mental healthiness नहीं बोल सकते, but a mental health is a dynamic concept. Dynamics means it is related to 2-3 concepts and it can't be achieved without a physical health unless and until you are physically fit. अगर आप नहीं हैं you can't reach to your मेंटल हेल्दीनेस. जैसे फॉर एग्जांपल हमको छोटी सी चोट भी लग जाती है सो इट कैन क्रिएट कि अरे यार नेल्स अगर मान लो थोड़ा सा ज़्यादा कट जाए या ब्लीडिंग हो जाए, दैट टाइम ऑल्सो यू हैव अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन कि अरे यार नेल्स ज़्यादा कट गए, अंदर ब्लीडिंग हो रहा है. ओके, सो एक छोटी सी चीज़ भी आपके एक मेंटल जो स्टेज है उसको इफेक्ट करता है. सो मेंटल हेल्दीनेस को अचीव करने के लिए मस्ट हैव अ गुड फिजिकल हेल्थ. फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट थिंग्स वी मस्ट से दैट. ओके, mental health and efficiency are not the same thing. Means your healthiness and your efficiency are not the equal thing. Means healthiness is a part where you can easily cope up with the stress, you cope up with the stressful situation and you adapt to the situation whatever is coming in. And efficiency is totally a different thing.
नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल हेल्दी पर्सन. अब हम लोगों ने स्टार्टिंग में डेफिनेशन देखा व्हाट